Hello, Namaste, Sat Sri Akal, good morning. This is Amit Vasisht from Dr. Syama Prasad Mukherjee University, MCA department, as well as GET faculty, Birsa Institute of Technology. आज पुनः आप लोगों का दोस्त अमित वशिष्ठ, मैनेजमेंट गुरु, प्रोग्रामिंग गुरु, philosopher and guide. Today I will discuss about Java and topic is constructor. आज कंस्ट्रक्टर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे. वाई यूज कंस्ट्रक्टर एंड हाउ कंस्ट्रक्टर इज डिफर फ्रॉम द मेथड. और ये मेनली हम लोग ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ ये बीटेक स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों का ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है कोर जावा का कि कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है. तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कंस्ट्रक्टर का डिफिनीशन क्या होता है. What do you mean by constructor? Constructor is a special method of a class that will be automatically invoked when object is created. In another word, we can say that constructor is a special method that initializes the object when class instance is created. The main purpose of constructor is to initialize the object and allocate the memory. So constructor क्या हुआ? Constructor एक स्पेशल तरीका का मेथड है जो क्या होता है ऑटोमेटिकली इन्वॉक कब होता है जब हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कराते हैं. और मेन टास्क ऑफ कंस्ट्रक्टर इट विल इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट एंड एलोकेट्स द मेमोरी. तो स्टूडेंट्स स्पेशली एक क्वेश्चन मन में आता है कि हम इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर का ही यूज क्यों करें और ये मेथड से कैसे डिफरेंट है. तो देखो कंस्ट्रक्टर क्या होता है. कंस्ट्रक्टर नेम एंड क्लास नेम ऑलवेज बी सेम एंड सेकेंड कंस्ट्रक्टर डज नॉट रिटर्न्स एनी वैल्यू and as well as compared to constructor method have return type or void. It does not returns any value if method should use void data type. So if we can use the constructor, there is no need to user input. We can initialize the variables with the help of constructor. You know the students, each and every program will be created in Java with the help of constructor. So now I will discuss about types of constructor. There are three types of constructor. First one is default constructor, second one is parametric constructor, and last one is copy constructor. But there is no concept of copy constructor in Java. So first of all I will discuss about default constructor. What is default constructor? A default constructor होता क्या है? Default constructor is also a special kind of constructor. Its main task is initialize the object. If we can passes the number of argument, number of parameter in default constructor, then it will be hidden and it will be converted into the parametric constructor. So in default constructor, developer or user never pass number of argument. If once we pass the number of argument in default constructor, then its nature will be changed and it will automatically convert into a parametric constructor. Or it is a special of kind of constructor and default constructor name and class name always be same. If you have a default constructor, so first of all we can do the work of default constructor, then do the any other work. Or with the help of default constructor we can also initialize the object. So
main task of default constructor is to initialize the object. Second one, I will discuss about parametric constructor. What do you mean by parametric constructor? Parametric constructor is also known as argument based constructor. So parametric constructor is also a special kind of constructor, and its main task is also initialize the object. And in parametric constructor, developer or user can also pass number of argument, number of parameter with different value with different object. So it is also known as argument based constructor or parametric constructor. With the help of parametric constructor, we can perform same work as method. But only difference, parametric constructor does not returns any value, and parametric constructor name and class name always be same. But method name and class name always be vary, and parametric constructor can perform to initialize the object. Any confusion, any doubt? Third one is copy constructor. What do you mean by copy constructor? In Java, we can perform the work of copy constructor in Java, but in another way. We never directly use the copy constructor. So we will discuss the special case how to perform copy constructor in Java in next session. So now first of all discuss how parametric constructor and default constructor can we work in a class. So first of all, you know that the syntax of the class name, curly braces open, variable declaration. After declaration of variable, we can declare the parametric constructor or default constructor. And we never use return type or void with constructor. Or one difference in parametric constructor or default constructor in Java and C++, we can call the constructor inside as well as outside. In C++, if we want to call constructor outside with the help of a scope resolution operator, but Java does not allow to use outside of the class. So when we declare the constructor, and then we can implement the work of the constructor. And at last, at the main section of the program, we can initialize the constructor with the help of object and do the work of constructor. So नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके प्रोग्रामिंग कंट्रोल का कैसे प्रोग्राम बनाते हैं, और इस सेशन को मैं यहीं पर लास्ट करता हूं। और आप लोगों से मेरा बहुत निवेदन है कि यदि आपको मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड्स को बताने का काम करें। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, सत श्री अकाल, राम राम जी।